Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. I can see Good half. evening, sir. Good evening. Very nice to see all of you. You can all unmute yourself and we can talk for some time. We have around 3 minutes. We will wait for 3 minutes and then we will start. Till the time if somebody wants to say anything, you can go ahead. Is my voice clear? Yes, sir. Very good, very good. I think there is some sound problem from somebody's end. So, homework. How many of you have done the homework? How many of you have done the homework? There was some homework given yesterday. Okay, dollar, yes. You have done the homework? Very nice. Fantastic. Very good. Very good. Ayush, you have done the homework? Ayush, you have done the homework? Yeah. Started hai? Yes. Okay, okay. Suyash, have you done the homework? Suyash, have you done the homework? Okay, good. Acha. Anyone who has come for the first time? Who all have come for the first time? I am first time. Very good. Very nice. Welcome. Most welcome, ma'am. Very nice. Thank you. Very nice. You guys can switch on your camera also so that I can see. Ishit, you can switch on your camera and unmute yourself. All of you can switch on your camera so that I can see all of you. Okay. Hi, Rishit. How are you? I am fine. Very nice. Very good. Very good. Very good. I think people are joining. We still have a couple of minutes. Then we shall start. Okay. Anyone wants to say anything about yesterday's session, today's plan, today's expectation? Anyone has any expectation from today's session? Squares done. Very good. Very good. Take care. All right. So what I'll do is I'll start with the session without wasting any time. All right. Do you agree? We shall start with the session. And let's do one thing. All of you can mute yourself now. I would want all of you to mute yourself. Okay, I have muted everyone. Okay, I have muted everyone. So now we shall start with the work straight away. Okay, now if there is anything, you can always write in the chat box. Fine, you can always write in the chat box. Okay. So instead of wasting any more time, we shall straight away start with the work. All you people have your pen, paper ready? All of you are ready with your pen and paper? Very good. Very nice. Very nice. Anyone wants to ask anything before we start with the work today? Is there anyone who wants to ask anything? You can write in the chat box. Anyone wants to ask anything? No? Okay. All right. So without wasting time, we have a lot of work today. Yesterday we saw the trailer. Today we will take up around 8 different methods in today's class. Today also is a kind of trailer only. Okay. But we'll take up 8 different ways of different calculations. Once again, I would like to ask, is my voice clear to everyone? Can you hear everything that I say? Do you understand everything that I say? You can put your answer in chat box. Okay. 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 Fine. Because I'm not using any headphone, I believe my computer's sound system is good. Perfect. 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 So as usual, very basic rule.
I'll speak in Hindi once, I'll speak in English once. Yes, आयुष, मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा. Don't worry, दोनों चीजें बोलूंगा. जहां जहां जरूरत होगी हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा. ठीक है? Okay, 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 okay. And as usual, I will go very slow. I'll ask you to ask your doubts. Whenever I tell you, you can ask your questions. Okay? Chalo, let's start with the first method of today. As you can see, it is written multiplication of numbers ending in 1, and it is for 2-digit and 3-digit numbers. Please stop using your pen, everyone. Yeah. Do not use anything on the screen. All right. Do not use anything on the screen. Those who have come today for the first time, after the class, you will have to wait for 10-15 more minutes. I'll take a revision of yesterday's class. Okay. Now what we are going to do today will not be much of a trouble. आज जो हम करेंगे, अगर कोई पहली बार भी करेगा, तो भी उसको तकलीफ नहीं होगी. ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का काम. Multiplication of numbers ending in 1. Let's say first with 2-digit numbers. एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूँ. 21 into 31. अगर हमें ये मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ध्यान से. कोई बात नहीं अमर, कोई बात नहीं. बहुत ध्यान से सुनिए. बहुत ध्यान से सुनिए. First 1 into 1, that is 1. Then add these two numbers. इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. Add these two numbers. 2 plus 3, that is 5. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 into 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, that is 6. So answer is 651. ऐसा सिर्फ तभी होगा when 1 is in the end. जब 1 end में होगा सिर्फ तभी ऐसा कर पाएंगे. Right? Let's take another example. Are we clear? Any confusion in this? If I have 41 into, let's say 31, I'm starting with simple numbers. 1 into 1, that is 1. Then 4 plus 3. 4 plus 3, that is 7. And 4 into 3. Yes, both the numbers should have 1. Both the numbers should have 1. 4 into 3, that is 12. So it is 1271. Okay. Let's take a larger combination. If I have 61 into 91. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया मामला. So please listen to me very carefully. 1 into 1, that is 1. Now 6 plus 9, 6 और 9 ऐड करिए तो कितना होगा? 15. 6 plus 9, 15 होता है. 15 का क्या करेंगे? चलो I'll tell you. We will write 5 here and 1 carry forward. हासिल. Carry forward सब लोग समझते हैं. जब कोई डिजिट एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसको अगले वाले में भेज देते हैं. So 6 plus 9 कितना हुआ? एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. 6 plus 9 is 15. तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा. And this 1 goes to the next part. And what is the next part? 6 into 9 multiplication. How much is 6 into 9? 54. 6 9 54. 54 plus 1. That is 55. I hope everyone is clear. See, children, understand one thing. क्या होता है? Whenever you wish, or there are a lot of people who do that also, they create a lot of fanciness. हमें हमारे कैलकुलेशन के लिए कभी भी फैंसी चीजों की जरूरत नहीं होती है. ठीक है? और यही बात मैं कल से समझा रहा हूं और आगे भी 25 बार बोलूंगा. I will always make sure, or you should also do that. Look at the basic process, repeat it so many times that you remember it comfortably. And yesterday also I said, today also I'm saying, again I'll say later on also, every method has a limitation. That is why we are taking conditional. So one by one, right? Like yesterday we did around 3 methods. Today we are doing 8 methods. Similarly, tomorrow we'll do around 8-9 methods. Every method is limited to a particular type of number. So this is the type of number in which 1 is there in both the numbers. I hope everyone is clear. Yes, Iraban, I'll do that. Let's take the next slide. If I have 51 into 121, Iraban, for you and those who joined late,
Listen very carefully. Whenever a number has 1 in the end, whenever a number has 1 in the end, both the numbers have 1 in the end, we have to multiply them. So 1 into 1 is 1. Then the remaining part you have to first add and then multiply. First you have to add. So 12 plus 5, how much is it? 12 plus 5 is 17. लेकिन 17 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, है ना? So what should I do? I should remove this one as the carry forward. ये 1 को हम carry forward कर देंगे, ठीक है? So this 1 is carry forward, and the next step, multiply 5 and 12. Multiply 5 and 12, that is 60. So 60 and 1, 61. बहुत अच्छा, Avesta, very good. Iravan, I hope you get it. बहुत आराम से, ध्यान से एक बार पढ़ लो, जो जो लिखा आप लोगों ने एक बार पढ़ लो, ठीक है? Let me take another one, a little more difficult one. Okay, let's take another example. If I have 41 into 71, we have to multiply these numbers. So what we should do? 1 into 1 in the end. Then the remaining portion, 4 and 7, you have to add. First you have to add. So 4 plus 7, how much is it? 11. 11 का 1 यहाँ पे आएगा और 1 carry forward होगा. 4 plus 7 is 11. तो ये वाला 1 इधर आ गया और ये वाला 1 carry forward. Then next step में सिर्फ 4 और 7 को multiply करो. Multiply 4 and 7. 4 into 7 is 28. 28 और ये 1 carry forward. 28 plus 1, 29. So I hope it is clear for Iraban and everyone. Very good. Yes, Dollar, you are comfortable? Let's go ahead. Suppose we have $31. 1 second. Iravan, I hope you are clear now. Let's take some more examples. If I have 1 second. Yeah, 31 into 171. 31 into 171. I hope everyone can also see the limit of this method. जैसे जैसे ये बड़ा वाला पार्ट आता जाएगा तकलीफ बढ़ती जाएगी, है ना? So 1 1 1, 17 plus 3, that is 20. So 0 here, right? 2 carry forward. Then 3 into 17, 51 and 2, 53. So 5301. Very nice. थोड़ा difficult वाला. 241 into 251. 241 into 251. Enjoy the process. Feel it that it is something that was already there with you people. ये सब आप लोगों को already आता था, है ना? Just point out करके अलग अलग करके आगे बढ़ना है हमको. I want you to understand and believe that ये सब आप लोगों को आता था. कोई अलग से बता के जाएगा ऐसा नहीं है, है ना? चलो let's see. So 1 and 1, ये तो 1 हो गया. Next part क्या आएगा? 24 plus 25. 24 plus 25 is 11, 49. So 9 here, 4 carry forward, and then 24 into 25. 24 into 25 कैसे करेंगे mentally? Can I say 24 is 6 into 4? Yes, yes, Manisha. ये 24 को मैं ऐसे break कर सकता हूँ क्या? What is the benefit? 4 into 25 will become 100. 100 into 6 will become 600. 604. 4 carry forward. So 600 plus 4. 604. I see that a lot of people have understood it. Are you guys feeling good about it? Are you guys feeling confident about it? I just want a simple comment. Yes, sir. Confidence चाहिए. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक डिफिकल्ट वाला देता हूँ, ठीक है? एक डिफिकल्ट वाला, थोड़ी तकलीफ होगी बट कोशिश करो करने का, है ना?
371 into 151. Please go ahead and do that. घबराना नहीं है, डरना नहीं है. 371 into 151. Don't be afraid of doing new things. It will take time. Give your time. Do not worry about it. Very good. So let's see. Anusmita has answered. No problem. Let's check whether it is right or not. So 1 into 1 is 1. Then 37 plus 15. See, number बड़ा हो गया तो तकलीफ बढ़ जाएगी. सीधी सी बात है. ठीक है? So 37 plus 15 is how much? 52. So 2 here, 5 carry forward. Now 37 into 15. It is difficult. Solve it properly. 15 threes are 450 and 7. So it is 555. Does everyone get it? 37 into 15. अगर आपको 15 का टेबल याद है तो 15 sevens are 105, 45 and 10, 55. है ना? So 555 plus 5 carry forward. So it will become 560. ठीक है? So the problem is not with this multiplication. You know, problem will be with this multiplication. If you can handle this one, it will become very, very easy. ठीक है? Are we clear? Anyone has any doubt? Now you can ask. Before I am done with this method, I'll go to the next method. If you have any doubt, Sir, please, if it is possible, could you repeat this again? put it in the chat box. Please put it in the chat box. Please keep yourself muted and put it in the chat box. That would be better. I will wait. I have a lot of time. Don't worry. Yes, it can happen in any digit number. End में 1 होना चाहिए, but the difficulty will increase. 37 into 15, you have to multiply by 15. 15 sevens are 105. So you get 5, 10 carry forward. 15 threes are 45 and 10, 55. Normal multiplication. No extra method, right, Saptarshi? No extra method. Very normal table of 15. Okay? Just table of 15. So what we have to understand, every method has a limitation. For a 2-digit number, this method is amazing. है ना? एक और कर लो. 81 into 91. After doing this, this should be a cakewalk. 81 into 91. Omkar, इधर उधर मत देखो, solve करो. I am seeing everybody. Yeah? 81 into 91. चलो फटाफट. 81 into 91. So 1 and 1 multiply. So 1, 8 plus 9, 17, 7. 1 carry, 8 9s are 72 and 1, 73. So for 2-digit numbers, this should be really, really amazing. For 3-digit, yes, with a little bit of difficulty, you can handle that. Okay. I'll still go ahead and take one more example. 121 into 151. Please multiply. 121 into 151. Very good. I'm so happy. So 1 into 1 is 1. 12 plus 15, 27. So 7 here, 2 carry. And then 12 into 15. So either you use table of 12 or you use table of 15. Right? So I'll do one thing, just one small thing that I can do. Can I say this 15 is 10 plus 5? ये मैं mentally कर सकता हूँ. Polus, I hope you are able to understand. 12 into 10 करेंगे तो 120 होगा. 12 into 5 करेंगे तो 60 होगा. So addition is very easy, 180. All this can be done mentally. है ना? So 180 and 2, 182. Very good. 18271. ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं. Let's take up the next method. All right, so please take a deep breath, everyone. The next method of today's session is multiplication by 11.
multiplication by 11. Okay. You can see today's session is very highly focused on 1, isn't it? Today's session focus is 1. Yes, sir. Chalo, multiplication of 11. This is one very interesting thing. All of you are with me? Suppose I have to multiply 37, or let's start with 34 first. 34 multiply by 11. Listen to me very, very carefully. Very, very carefully. We will start with the last digit, that is 4. So in the answer, we will take 4 in the end. कुछ नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं, कुछ नहीं, जस्ट 4 का 4 आ जाएगा. Okay, then take 2 digits and add. Take 2 digits and add. So 4 plus 3. 4 plus 3 कितना हो जाएगा? 7. Take 4 plus 3, add, and then in the end just take 1 digit. That is this one, 3. पिरामिड समझते हैं? पिरामिड ऐसे ऐसे. सो पहले सिर्फ एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, इस तरह से. दोबारा से, इफ आई हैव 53 multiply by 11, start from the end, take just 3, add these two, 5 plus 3, that is 8, and just 5. I hope everyone is clear with this. Let me take another example. If I have 234 multiply by 11, 234 multiply by 11. डॉलर मैम आप आपका म्यूट कर देंगे प्लीज, म्यूट करेंगे, शायद कुछ आवाज आ रही है, जस्ट म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं, जस्ट म्यूट कर दीजिए. हाँ, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है. चलो, now let's see. Now this one is a slightly tricky one. Everyone please pay attention. I'll go very slow. I'll first speak in English, then I'll speak in Hindi, so nothing to worry. Start with the last digit, take that digit alone, then add 2 digits. 2 digit में क्या आएगा? This first you'll take 4 plus 3. 4 plus 3, that is 7. Then again add 2 digits. But कौन सा 2 digits? Next 2 digits. That means 3 plus 2. 3 plus 2. That is 5. ठीक है? Now there are no more 2 digits available, so just alone first digit 2. I'll explain again, don't worry. सबसे पहले एक डिजिट ले लीजिए, उसके बाद इसको रख के 2 डिजिट, इसके साथ में 2 डिजिट, सो 4 and 3 उसको ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7. उसके बाद फिर से 2 डिजिट, लेकिन अब की बार 4 छोड़ दीजिए और 3 से आगे, सो 3 plus 2, 5 आ गया ना. अभी 2 से आगे कुछ भी नहीं है, तो 2 अकेला आ जाएगा, सो 2 5 7 4. ओके, और एक देता हूं, 7 2 5 3 multiply by 11. सो पहले एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, और लास्ट में फिर 1 डिजिट. या अनुष्मिता, आई होप यू गॉट इट बेटा. Yes, sir. वेरी गुड बच्चा. सो स्टार्ट फ्रॉम 3. 3 plus 5 8, 5 plus 2 7, 2 plus 7 9, and then 7 अकेला पड़ गया, सो 7. ठीक है. अच्छा, टिल नाउ आई हैव गिवन ओनली दोज एग्जांपल्स जिसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया है ना. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल जिसमें कैरी फॉरवर्ड आएगा. आर यू पीपल रेडी? Yes, sir. चलिए, बढ़िया. If I have simple number 78 into 11, बहुत प्यार से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, कोई भी. Even if you know the method, don't worry, there is a lot to learn. Okay, Iravan, it can happen to any number beta, any number multiply by 11. Chalo, let's take this one. So start with 8.
Then 8 plus 7. How much is 8 plus 7? 8 plus 7 is 15. 15 के लिए we'll take only 5 here and 1 carry forward. Next one is only 7. इसके आगे तो कुछ नहीं है लेकिन carry forward आएगा. So 7 plus 1, that is 8. Yes? If I have 597 multiplied by 11. 597 multiplied by 11. Yes? So 7 in the end. 7 plus 9, 16. 1 carry forward. 9 plus 5, 14 and 1, 15. 1 carry forward. And then 5 alone. So 5 plus 1, 6. Very good. Rishit, are you able to understand? Are you able to solve? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Very good, very good. Fine. Let's take a little more complicated one. 694738 multiply by 11. डरना नहीं है, डरना नहीं है बस. Manisha, it is multiplying. The multiplication is of 11 only, but in the process 11 has no role to play. In fact, it has one hidden role. I'll explain. It has one hidden role. It has one hidden role, okay? You know, I always enjoy this session because people have a lot of work to do. मेरा काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. Very good, very good. Very good. So 8. 8 plus 3, 11. 1 carry forward. 3 plus 7, 10 and 1, 11. 1 carry forward. 4 plus 7, 11 and 1, 12. 2. 1 carry forward. 4 plus 9, 13 and 1, 14. 4. 1 carry forward. 9 and 6, 15 and 1, 16. 6. 1 carry forward. And then 6 alone. 6 alone. Ayush, Manisha, everyone. $. 6 and 1, 7. 7, 6, 4, 2, 1, 1, 8. Varinya, बच्चा लास्ट में ये 6 अकेला तो आएगा ना. So this 6 and 1. So 7. डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं. Let's take another one. 8, 9, Sir, 4. sir, Yes. sir, वो लास्ट में 6 plus 1 करना रह गया वरना. Right. No problem. No problem. We have to make our due mistakes. Nothing to worry. 8, 9, 4, 7, 8 into 11. कभी सोचा था इस तरह के क्वेश्चंस करने मिलेंगे कभी? No, 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 no. फिर से सुहानी, please do it again. Jagjit, did you understand? बच्चा देखो, फिर से देखो. Look at it. Look at it. Start from the end. So 8. Then 8 plus 7. How much is 8 plus 7? 15. So we take 5 here. We get 1 carry forward. Then 7 plus 4. 11 and 1, 12. 1 carry forward. Then 4 plus 9, 13 and 1, 14. 4, 1 carry forward. Then 9 plus 8, 17 and 1, 18. 1 carry forward. और लास्ट में ये अकेला 8 है ना. So 8 plus 1, that is 9. So 9, 8, 4, 2, 5, 8. 5, 8. वंदित बच्चा चेक करो तो 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, है ना. Good, very good, very good. Everyone, very nice, very nice. बहुत अच्छे. $. Very good.
I'm so happy. Chalo, badhiya. So I hope you are clear about the method. Yeah, now I was explaining the role of 11. Suhani said whether 11 has any role or not. I'll tell you, 11 has a role. हमने कैसे शुरू किया? हमने पहले एक डिजिट लिया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद दो दो डिजिट ऐड कर रहे हैं ना, दो दो डिजिट ऐड कर रहे हैं ना. क्यों दो डिजिट ऐड कर रहे हैं? तीन क्यों नहीं कर रहे? चार क्यों नहीं कर रहे? दो ही क्यों कर रहे हैं? Because 11 has two ones. Because 11 has two ones. अच्छा, मतलब अगर 1 1 1 होगा तो तीन तीन ऐड करेंगे, 1 1 1 1 होगा तो चार चार ऐड करेंगे. राइट. सो वो बाद में. Yes, absolutely. सप्तर्षि, you are right. Very good. मनीषा, बहुत अच्छे. Absolutely, Iraban. I have always said every method has a limitation. हर इंसान की एक limitation होती है, हिम्मत की, ताकत की. ठीक है? So every method also has a limitation. Yeah. चलो, let's take couple of more examples. Freehand. 7 6 4 9 3 8 multiply by 11. I hope you guys are able to read what I'm writing because my electronic pen is giving me a little trouble. 764938. Manisha, put 00 in front of that. Put 00 in front of that and then you can multiply. I'll take that example also. Don't worry. पहले मेरे साथ कर लो, ठीक है? Because मेरे साथ करने से क्या फायदा होगा? I will take one by one. I will not leave anything, है ना? Children, please check the number. Please check the number again. This is the number 764938. कोई बात नहीं. दोबारा देख लो. 764938. कोई टेंशन नहीं है, कुछ डरना नहीं है. We are all here to learn. So first we get 8. पहले ये अकेला, फिर दो दो डिजिट. So 3 plus 8 11, 1 carry. 3 plus 9 12 and 1 13, 1 carry. 9 plus 4 13 and 1 14, 1 carry. 4 plus 6 10 and 1 11, 1 carry. 6 plus 7 13 and 1 14, 1 carry. Then 7 alone and 1 8. So 8 4 1 4 3 1 8. So I believe this is absolutely clear for everyone. Now I'll just wait for 10 seconds, and if anyone has any doubt, please put your doubt in the chat box. I'm constantly looking at the chat box. I will not miss it, I promise you. So if you have anything, any doubt, you can put here. If there is no doubt, then it is okay. If anyone has a doubt, you can put it here. Mistakes will keep on happening. Please let them happen. Mistakes ko hone do. Chalo. What if we have multiplication by 1 1 1? Absolutely. Very nice, Avesta. That is the third. After this, we have squares. Avesta, just hold on, bacha. We have the squares today. Now multiplication by 1 1 1. So I'll take an example. Listen very carefully. 2 3 4 into 1 1 1. How do we go about it? Now listen very carefully. एक बार सब लोग मेरी बात सुनो. रुक जाओ. कुछ भी मत करो. Just listen to me. You remember the method for 11? What was that method? You start with one digit, then you take two digits. That's what we did. In case of 3 ones, we start with one digit. तो सबसे पहले एक डिजिट लेंगे. We start with one digit. Then we take two digits. I repeat, then we take two digits. So 4 plus 3, that is 7. Then we take all three digits. मतलब यहीं से शुरू करके 4 plus 3 plus 2. 4 plus 3 plus 2. पहले एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीन डिजिट. ओके, पिरामिड बनेगा. राइट? सो पहले एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीन डिजिट. सो 4 plus 3 plus 2, that is 9. अभी रुको ध्यान से सुनो. I repeat once more.
First we start with last digit, take 1 digit. Then we take 2 digits, 4 plus 3. Then we take 3 digits, 4 plus 3 plus 2. अब आगे और डिजिट नहीं है तो वापस कैसे जाएंगे? वापस सीक्वेंस में ही जाएंगे, मतलब टेक 2 डिजिट्स, ये दोनों 3 plus 2 that is 5 and then take 1 digit that is 2. So hold on, जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया था? पहले एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर एक डिजिट, ऐसा लिया था. जब हम 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पहले एक डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट और फिर एक डिजिट. 1 2 3 2 1. मेरे पास कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. आई टेक वन मोर एग्जांपल. 1 3 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1. बहुत शांति से. यस अविस्ता, लुक एट दिस बेटा. फर्स्ट यू टेक 1 digit, then you take 2 digits, 5 plus 3, 5 plus 3 that is 8. Then you take 3 digits, so 5 plus 3 plus 1, 5 plus 3 plus 1 that is 9. Bas, ab there is no other digit further, so what we do is we take these 2 digits, अब 5 को छोड़ दो, 3 1, so 3 plus 1 4, and then अकेला ये digit. Avesta, first we take 1 digit, then we take 2 digits, then we take 3 digits. If there is no other possibility for 3 digits, then we go back 2 digits, 1 digit. So 1 2 3 2 1 ऐसा. ठीक है? Let me take a larger number. Okay, I'll take a larger number. 3 1 2 4 3 multiply by 1 1 1. 3 1 2 4 3 multiply by 1 1 1. First you take 1 digit, so 3. Then you take 2 digits, so 3 plus 4. Then you take 3 digits, 3 plus 4 plus 2, that is 9. अब यहाँ पे hold on, we have more 3 digits option possible. So now we take, listen carefully, 4 2 1. अब ऐसे 3 डिजिट जितने बार आएगा वो लेते जाएंगे. 4 2 1 7. Then again 3 digit, 2 plus 1 plus 3, that is 6. अब 3 digit possibilities खत्म. Then we take these 2 digits. So 1 plus 3, that is 4, and then in the end 3. So method वैसा ही है जैसे 11 का था. In 11 we had 2 digits. In 111 we had 3 digits. Yes, Rishit, did you get that? Rishit Bhattacharya, did you get that? Yes sir. अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे. Everyone, please listen to this carefully. Sir, hello. Yes. Hello. Please write in the comment box. सर मेरा एक प्रश्न है सर. हेलो. Yes. सर आपने अभी जो बताया सर उसको याद रखने का कोई ट्रिक्स है अलग से, जैसा डॉट्स में आपने जो पहले समझाया था इससे पहले, तो वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया सर. अब ये जैसा ये जो आंकड़ा है, ये 5 अंकीय आंकड़ा है ना, जो 5 अंकों का है ना, तो इसको जैसा डॉट्स में याद रखने के लिए कोई अलग से कुछ फॉर्मूला है? जैसा आपने शुरू में जो 3 अंकों का जो बताया था आपने, पहले 1 डॉट्स, उसके बाद 2 डॉट्स, उसके बाद 3 डॉट्स, फिर 2 डॉट्स, फिर 1 डॉट्स. यही तो वैसे इसके exactly. हाँ यस, हाँ राइट, ये बताइए सर आप. Exactly. बताइए. This हाँ, is the method. हाँ, तो सर ये एक बताइए पीरियडिकल कैसा करना है. हाँ राइट. 3, ठीक है. And if there are more possibilities, ये 3 3 3 चलता जाएगा और लास्ट में वापस 2 और 1. ठीक है. ये मतलब फैंसी है, समझिए इस चीज को.
ये एक फैंसी बात है, ठीक है। नहीं पर ये इसके दिमाग में जल्दी बैठ रहा है सर, आप जो बता रहे हैं ना विषय दिमाग से जल्दी ठीक बैठ रहा है, है, क्योंकि ठीक। करना क्या है वो एकदम वो पिरामिडल बना दिया, एक डिजाइन दिमाग में ले लिया तो खत्म हो जाता। ठीक। So I hope everyone understand this. Anyway, चलो let's take one more example. मैं तब तक कराता रहूंगा जब तक सबको क्लियर नहीं होगा, ओके? या let's see. 3 1 5 2 multiply by 1 1 1. Yes, Iraban, look at this. Because there are 3 ones, we start from the last digit. We take only one digit first. We take only one digit first. Iraban, we take only one digit first. Then we take two digits. Right? Add them. 2 plus 5, 7. Then we take three digits. 2 plus 5 plus 1. 2 plus 5 plus 1. That is 8. Then we take next three digits. एक बार थ्री डिजिट आ गया तो तीन तीन लेते ही जाएंगे तब तक जब तक पॉसिबल है. 11 will keep on taking three digits till the time it is possible. ठीक है? So 5 plus 1 plus 3, that is 9. Now there are no more three digits possibility. So now we will take two digits. Two digits. Okay? So 1 plus 3, that is 4. Then we'll take one digit. One digit, that is 3. Bas, that's it. I hope this is clear now. Now I'll take the situations where we have some carry forward. Okay. Manisha, please remove this, whatever you have done. And please make sure that nobody uses the stroke, pen stroke right now. Okay. Chalo. Now let's take a situation of carry forward. Saptarshi, there are many more examples. Don't worry, bache. Don't worry. I'll repeat once more. If you are multiplying by 111, then first you take one digit, then you take two digits, then you take three digits. Go on taking three digits till the time it is possible. Then again take two digits and then take one digit. That's it. So सबसे पहले take one digit, 6. Then 6 plus 8. 6 plus 8 is how much? 14. 4 here. 1 carry forward. Then 6 plus 8 plus 7. 6 plus 8 plus 7. That is 21. 21 and 1 carry forward. 22. So 22 ka 2 here. 2 carry forward. Then अब आगे 3 digit और नहीं है ना? So 2 digits. Only these 2 digits. So 8 and 7. 15 and 2. 17. 1 carry forward. Then in the end, just one digit, 7 and 1, 8. So I see there are a lot of people who are able to do. I want people who are not able to do. Let's increase the level. 5, 9, 8, 7, multiply by 1, 1, 1. I hope you can also identify the limit. The way we are moving ahead with larger numbers, it is becoming more and more difficult. But I just want you to have a deep breath. लंबी सांसें लीजिए और आराम से धीरे धीरे करिए. So first you take one digit, then two digit, then three digit, then three digit जहां तक जाए. Iravan and yeah, Aishwarya, carry forward. Okay. So we take 6, then we take 6 plus 8, 14. 14 ke liye 4 here and 1 carry forward, right? You understand carry forward. Then 6 plus 8 plus 7, 21 and 1, 22. So 22 ke liye 2 idhar and 2 carry forward. Then 8, 7, 15 and 2, 17. 1 carry forward, 7 and 1, 8. Yeah, Aishwarya, let's see. Once again, huh? Once again. It's clear. It's fun. There's a larger number, so start from 7. 7 plus 8, 15. 5 here, 1 carry forward.
1 digit is over, 2 digit is over. Now we shall take 3 digits. 3 digits means 7 plus 8 plus 9. 7 plus 8 plus 9. 15 and 9, 24. 24 and 1 carry forward. 25. So 5 here. Then 2 carry forward. Now, these 3 digits. इसमें तो आगे है ना 5. So we have 8, 9, 5. 8, 9, 5. So 8 plus 9, 17 plus 5, 22 plus 2, 24. So 4 here, 2 carry forward. Now there are no more 3 digits possibilities. So we take 2 digits. These 2 digits. These 2 digits. So 9 plus 5. 9 plus 5. 14 and 2 carry forward. 16. Now 1 carry forward. Then in the end, 1 digit. So 5 and 1, 6. So 6, 6, 4, 5, 5, 7. No, for 101 and 1001, it is different. That is very specific. वो मैं last session में लूँगा. Manisha, that I'll take in the last session. Okay. Now, one more example. What if I have 34 into 111? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। Which one? सर 5, 9, 8, 7। हाँ, पहले 7 ले लीजिए, एक डिजिट। सुनना पड़ेगा पहले एक डिजिट लीजिए, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3-3 लेते जाइए जब तक लेना पॉसिबल है। जब वो लेना पॉसिबल खत्म हो जाए 3 डिजिट, तब 2 डिजिट लीजिए और 1 डिजिट लीजिए। बिल्कुल रॉकेट साइंस मत बनाइए इसको। जितना छोटा है उतना ही छोटा सोचिए इस क्वेश्चन का मेथड के लिए। कोई बड़ा फैंसी चीज मत ढूंढिए। तो पहले 7 लिया, 7, फिर 7 और 8 लिया, तो उसको जोड़िए। 7 plus 8, 15, 15, 5 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 3 डिजिट लेना है। सो 7 plus 8 plus 9, 7 plus 8 plus 9, that is 24, plus 1, 25, so 25, 25, 5 यहाँ पे, 2 कैरी फॉरवर्ड। अब 3 डिजिट हो गए। अब अगले 3 डिजिट यहां से एक छोड़ के ऐसा, ये वाला, ठीक है, इनको जोड़ना है। 8 plus 9 plus 5। ऑर्डर फॉलो करिए, ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो करिए, जो मैं बता रहा हूं उसका सीक्वेंस फॉलो करिए। सो 8 plus 9 plus 5, 17 and 5, 22 and 2 कैरी फॉरवर्ड जो भी था 24, 24 आ गया, तो 4 यहाँ पे, 2 कैरी फॉरवर्ड। अब आगे और 3 डिजिट का पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये लास्ट था। 8, 9, 5 ये लास्ट था। सो नाउ विल टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट, 9 और 5। सो 9 and 5, 14 and 2, 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड। लास्ट में फिर एक डिजिट, लास्ट में फिर एक डिजिट, तो 5 और 1, 6। दैट्स इट। चलो अब आगे देखते हैं। 34 into 111। आयुष प्लीज चेक एंड टेल मी इफ यू आर फाइन विद इट। We can always put a 0 here. If anyone has any confusion, we can just put a 0 here, right? And then apply the same method. So if I take 4, Ayush, देखो, 4 plus 3, 7. Then 4 plus 3 plus 0, still 7. Then 3 plus 0, that is 3, and 0 alone. तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 75 into 111। चलो अभी भी इस, if there is anyone who has a trouble, please tell me. Is there anyone who has a trouble? सर Yes. सर इसमें तो मतलब ये इंटू 111 है और ये खाली 2 डिजिट है। 0 डाल दो बेटा। ओके सर। 0 हमारा दोस्त है, ठीक है। चलो so let's take सर 1 अगर digit। 1 डिजिट जैसे 5 आ जाए, 5 into 111। 0 0 डाल दो। अच्छा एक डिजिट आएगा तो फिर वो भी क्यों करोगे? अगर सिर्फ एक डिजिट है तो वो भी क्यों करोगे? हाँ कितना क्यूट है ये 555, देखो तो। हाँ सर। सर पर ऐसा हो कि 7 111 7 111 मतलब 7 times 111 हो बच्चे और एवरी उसमें एवरी मेथड, और जब 25 हो तो हम उतने every जीरो method ऐड has- कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एवरी मेथड हैज अ लिमिटेशन।
एवरी मेथड हैज अ लिमिटेशन, है ना? उसका भी मेथड बता सकता हूं मैं, बट वो अभी आपके लिए काम नहीं लगेगा. योर्स, फॉर यू 11 इज मोर इंपॉर्टेंट, 111 इज लेस इंपॉर्टेंट. उसके बाद जरूरी नहीं है, ठीक है? उसके बाद जरूरी नहीं है करने की. फाइन, वी विल फोकस ओनली ऑन 2 डिजिट एंड 3 डिजिट एट मैक्स. Okay. Chalo, so we have 5, then 5 plus 7, 12, 1 carry forward, then 5 plus 7 plus 0, that is 12, and 1, 13, 1 carry forward, then 7 plus 0, 7 and 1, 8, and then 0 alone, so 0. Okay. All right, so I think मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फास्ट जा रहे हो आप लोग. I had not imagined कि इतना फास्ट होगा, but I'm happy. Is there anyone who is having any problem? Tell me. Now we are going to the fourth method. I was expecting you people to be slow, but you guys are really fast. So आप लोग एक बार लंबी सांस लेके अपने लिए ताली बजा सकते हो. So I'm very happy that you guys are going very fast. All right, so take a deep breath. Now we'll take up squares of number ending in 1. You already know the method. Let's see. If I have to find square of 31, can I do it? Can you find square of 31? सर आपने लास्ट टाइम समझाया था, मुझे याद है. अच्छा, 13 का स्क्वायर को उल्टा करता तो 31 का स्क्वायर आ जाएगा. वेरी गुड. ओमकार, ओमकार अभी बोलो मत, अभी बोलो मत. हाँ बच्चे, अभी म्यूट कर दो, ठीक है? अभी म्यूट कर दो. ओके सर. Yes, Shreya, I'll take it. I'll take it after some time. Okay, I'll take it. Yes, 31 into 31. अभी method समझ ले. 31 into 31. We have just done that method. 1 into 1 is 1. Add 3 plus 3, that is 6. And then multiply 3 into 3, that is 9. Can we reduce it? Can we reduce the length of the process? Can we do it like this directly? 1 ka 1, then 3 ka double. What is 3 ka double? What is 3 into 2? Whatever it is, multiply by 2. 6. And then 3 ka square. What is 3 ka square? 9. Can we do it like this? 961. सर ऐसा मेथड है, मैथ्स की क्लास में पढ़ा था. ओंकार, ओंकार अभी म्यूट रखो ना. अभी आपका म्यूट रखो, ठीक है? मतलब अभी म्यूट रखो बेटा, अभी म्यूट रखो, ठीक है? Yeah, everyone, 41 square. Please use your chat box. Please use your chat box. 41. I'll explain the method again. 1 ka square 1, then 2 parts. Multiply this by 2 and then take square. Multiply this by 2. So 4 into 2, 8. Ayush, dollar. Yes, very good, very good. And then square of 4, 16. No, Avesta, only for number ending in 1. Only for number ending in 1. 61 का square. 1 के लिए 1. Multiply by 2 and square. 6 2s are 12. 1 carry forward nahi bhulna. 1 carry forward, everyone. 1 carry forward. 1 carry forward. So square. Yes, any number. 1631, 141, any number. But it will be difficult. It will become a little more difficult. Okay. We will focus on 2 digit and 3 digit numbers. So 6 ka square 36 and 1 37. 3721. Iraban, please tell me if you understand this. 71 square, 51 square, 81 square. Please use your pen paper. Very good, Ayush. शायंतन, बड़ी शांति से आप पूरा करते जा रहे हो, बहुत अच्छे. जगजीत, very nice. Vandit, very good.
फैंटास्टिक फैंटास्टिक। उदय हुसैन बहुत अच्छे। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। जस्ट एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गिव योर ड्यू रिस्पेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड। सबसे ज्यादा जो आपके जीवन में तकलीफ देता है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड। ऐश्वर्या, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। You know, the mistakes will happen because of carry forward. Just make sure that you take care of it. Yeah. Yeah, that I will get. I'll get. Don't worry. I'll get it. Suhani, just write the answers. I'll get it. Very good. Saptarshi, बहुत अच्छे. Very nice. So 1 के लिए 1. 7 twos are 14. 1 carry. 7 square 49 and 1 50. Rishit, are you able to do? 1 के लिए 1. 5 का डबल 10. 1 कैरी फॉरवर्ड। वेरी गुड वेरी गुड। 5 सर अब 3 डिजिट बताओ ना, वो बहुत सस्पेंस हो गया है। 3 डिजिट कैसे करेंगे? थांबा। 81 स्क्वायर 1 के लिए 1. 8 का डबल 16. 1 कैरी। 8 का स्क्वायर 64 and 1 65. Okay, now let's take some real difficult numbers. Okay, 101 or 111 or 121. Rishit will still keep one separate and this entire thing as one item. We'll keep this one separate and this entire thing as one item. How much is it? 10. So 1 ka square 1. 10 into 2. How much is 10 into 2? 20. So 0, 2 carry forward. Then 10 ka square. How much is 10 square? 100. 100 plus 2? 102. Right, Rishit? You separate 1 and take entire everything remaining as 1. Single item. 1 अलग कर दो और 10 अलग करो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां से 1 अलग करो, ये वाला 1 अलग करो, तो बचा कितना? 11. फॉर दिस 1 इट विल बी जस्ट 1. 11 का डबल, दैट इज 22. कैरी फॉरवर्ड 2. 11 स्क्वायर 121 plus 2 123. That's it. 121 square. So 1 is 1. 12 ka double. 12 ka double. That is 24. 2 carry forward. 12 ka square 144 and 2 146. Yes, Rishit? 151 square. 251 square. ऋषित कहीं पे अटक रहा हो बेटा? नहीं सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक. 151 square, 251 square. Very good, very good. So 1 के लिए 1. 15 का डबल 30. 0 3 कैरी फॉरवर्ड. हाँ 11 1 second बेटा. And 15 square 225 plus 3. Now 15 square you should remember. If you do that, then it is very nice. So 225 plus 3 228. 11, just take a look at the previous slide. I hope you guys have done the homework that I had given yesterday. The homework was squares up to 25. है ना? 11, please tell me if you are done with the previous slide. Okay, now 251. So 1 के लिए 1. 25 double 50. So 5 carry. 25 square 625 plus 5, that is 630. 63001.
Is there anyone who has any kind of confusion in squares in numbers ending in 1? किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ? ऐश्वर्या, आयुष? No, sir. Okay. No, sir. Very good. Chalo, let's take one No, more. sir. Let's take some difficult Okay. one. Acha. Iravan, look at this again. 191 square. Now I have given a little difficult one, okay? 221 square. I'll repeat the whole process. Listen everyone very carefully. जिनको भी problem हो ध्यान से सुनो. For 1, we will take 1. For 19, there are 2 parts. For the entire remaining thing is one single item. There are 2 parts. First part you multiply by 2. Now 19 into 2 is 38. So for 38 we get 8 and 2 carry forward. 3 carry forward. 3 carry forward. Then 19 square. Now 19 square you have to remember. That is 361. Iravan, if you don't remember 19 square, then it is a different issue. That is not the problem of this method. I have always said, yesterday I had said 1 to 25 square, you have to remember anyways. अब वो दूध के साथ या शहद के साथ किसी भी चीज के साथ वो आप याद कर लो. 1 to 25 squares you have to remember anyhow. So 361 plus 3 carry forward, 364. So I hope now it is clear. It will keep becoming difficult when this larger number, this first part becomes large, right? So 1 के लिए 1, 22 का double 44, 4 carry. There is only one way. Keep doing it. Keep doing it. Write it on a notebook. Identify which one are you making mistake. See, understand. Good question, Manisha. Good question that you asked. Listen carefully. You have to understand that all the numbers from 1 to 25 cannot be difficult. सारे difficult होंगे ऐसा possible ही नहीं है. 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, उनको अलग करो. Then focus on the ones that you are finding it difficult. Like 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर. Give them more respect and time. As simple as that. Never assume कि सब difficult है, ऐसा नहीं. और sequence में करने की कोशिश मत करो. Okay, so this 22 square is 484. So 484 plus 4, that is 488. Right, so I think numbers ending in 1 is very nicely done now. Let's go ahead. 311 ka square. These recordings are not coming out very good. Okay, Mahaksh, these recordings are not coming out very good. So we are not sharing it. Don't worry, I'll put it up on my channel, so you'll be able to get through that later on. Yeah, 311 square. 311 square. Just now we had done 31 square. So for 1 we have 1. Then 31 ka double 62. So 2 here, 6 carry. 31 ka square. Anyone remembers 31 square? 961 plus 6, 967. You know, there is one very important thing, recall. जैसे जैसे जो जो चीज करते जाएं उसकी recall value check करते जाएं. Okay. Now we'll move on to the next method of day. Chalo, take a deep breath. We have a couple of small methods, so we'll complete that today. Then we will go home. I mean, we are all home only, but then we'll take a break. Multiplication of numbers having first part same and the sum of last 2 digits equal to 10. I'll give an example. 34 into 36. Do you see something? What is special? First part is same and the sum of last digits is 10. Can you see that? 4 plus 6 is 10. Now, how to solve this? Listen very carefully. There will be 2 parts in the answer.
The last part will be 4 into 6. How much is 4 into 6? 24. So 24. pura ka pura 24. 24. Pura ka pura 24. Then what will be the first part? Listen very carefully. Listen, listen. Don't speak. Listen. ये सेम है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए. सेम नहीं होगा तो ये मेथड नहीं लगेगा. ध्यान रखना. If it is same, what is the next number of 3? What comes after 3? 4. 4. So multiply 3 and 4. Multiply 3 12. and 4. 12. So this is 12, 24. अब फटाफट करके बताओ मुझे. 37 into 33. 39 into 31. 37 into 33. So 7 into 3, 21. 3 into 4, 12. I repeat, the first part has to be same. If it is same, then just take the next number and multiply. So 3 into 1, 3 plus 1, 4, and 2, 3, 12. ये कैसे करेंगे? ये tricky है. Remember, second part should have 2 digits. Polas, I hope you are able to do it. Aishwarya Jai Kumar, I hope you are able to follow. So Yes, sir. 9 into 1. You will not write it as 9. You will write it as 09. Kya baat? And then 3 into 4, that is 12. Yes? 42 into 48. 53 into 57. 61 into 69. 84 into 86. So 2 into 8, 16. And 4 into 5. दोनों same है तो 4 into 5, 20. Very good. 3 into 7, 21. 5 into 6, 30. Yes, Saptarshi. First you read the condition. First part should be same and sum of the last digit should be equal to 10. In that case, here you can see first part is same and last part is addition is 10. So how do we multiply? Listen carefully. Polas, please listen to the method carefully. Multiply the last part. So 1 into 9, that is 09. Right? And then, ये दोनों same है ना, कितना है? 6 है. What is next number after 6? Yeah, 6 में 1 add करो. How much do you get when you add 1 to 6? You get 7. 6 का next number in the normal counting, that is 7. Multiply these two. That is 42. 4209. Okay. 4 into 6, 24. 8 into 9, that is 72. So this will keep on happening. I'll give you a difficult one, okay? 153 into 157. Absolutely, bilkul sahi. Iravan, see, when the number becomes larger, the difficulty will increase. Method will remain same. Again, every method has a limitation, right, bacha? 804 into 806. डरना नहीं है, डरना नहीं है. Yes. 3 into 7, 21. 3 into 7, 21. And 15 into 16. बड़ा हो गया, तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी. It will create a trouble. है ना? So 15 into 16, 240.
Now 804 into 806, so 24. Then 80 into 81. Anushmita, 81 bacha, 81. So 80 into 81, that will be 648. So 6480. Very good. So this will keep on happening. सबसे खतरनाक देता हूं, देखते हैं कौन करता है ये. कोई कर ही नहीं पाएगा मुझे लगता है. I don't think anybody can do this question. 993 into 997. 993 into 997. करके दिखाओ मुझे. Okay, Ayush, I get it. Suyash, I get it. So 3 into 7, 21. 99, 99. So 99 into 100. 11, 2 0 beta, 2 0. 99 into 100, huh? 99 into 100. Does everyone get this? Yes, sir. Chalo, badhiya. So I think we have done quite a lot of methods today. सर एक बार एक वापस लो सर, ये हिंदी में जरा, ये 3 अंकों का जो लिए ना आपने अभी. हाँ. Condition is, कैसे condition is last देखो digit, शुरू में सर last digit का जो हाँ. addition है वो 10 होना चाहिए and बाकी पूरा का हाँ. पूरा सेम होना चाहिए. जो ये है वही ये भी होना चाहिए. अच्छा अच्छा, उसी टाइम पे वो लागू है ना. हाँ. अच्छा ठीक है. तो see, every method has a condition, right? अच्छा एक सिंपल सी बात है ना, लाइसेंस ड्राइविंग का कब मिलता है? 18 साल से नीचे क्यों नहीं मिलता? देयर इज अ रिक्वायरमेंट, राइट? सो एवरी नंबर हैज अ प्रॉपर्टी, राइट? नॉट एवरीबॉडी कैन प्ले क्रिकेट और रेसलिंग, है ना? एवरी स्पोर्ट्स हैज अ रिक्वायरमेंट. सिमिलरली एवरी मेथड हैज अ रिक्वायरमेंट एंड अ यूजेज. इट कैन नॉट बी थ्रू आउट. ऐसा बहुत कम प्रॉपर्टीज होती हैं. देयर आर वेरी फ्यू प्रॉपर्टीज, वेरी लेस प्रॉपर्टीज व्हिच आर डायरेक्टली एप्लीकेबल. ठीक है? Now I am going to give one more method. चलो ये हो गया अभी, ठीक है? I am going to give one method of squares, जो कि बड़ा सिंपल सा तरीका है. Suppose I have to find square of 32. Listen everyone very carefully. ध्यान से सब लोग सुनिएगा. I am talking only about 2 digits right now. Later on we'll extend it to 3 digits. अभी मैं सिर्फ 2 digits की बात कर रहा हूँ. Okay? What is 2 का square? 4. What is 3 का square? 9. Okay? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई these two. You get 6. उसको डबल कर दीजिए. How much is double of 6? 12. 12. So इधर 2 आएगा. 1 कहाँ जाएगा? 1 Carry. अरे वाह मेरे शेर, 1024. Let's take one more example. Okay? 29 का स्क्वायर. ये के लिए कॉपी. One second, listen carefully. फिर से बताता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो. जब तक सब लोग ऐसे हार नहीं मान लेंगे तब तक बताता रहूंगा. स्क्वायर एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन एंड देन डबल. Now what is 9 square? 81. So 1 आएगा और 8 carry forward. Do you realize that? 8 carry forward. Then 9 twos are 18. 18 twos are 36. 36 and 8. How much is 36 and 8? 44. So 4 carry forward. Anushmita, 4 carry forward beta. 4 carry forward. Then 2 का square 4 and ये वाला 4. 8. घबराना नहीं, डरना नहीं. फिर से. Let's take a simpler one. Yes. 23 square. So square of 3, 9. Square of 2, 4. 2 into 3, 6. 6 का double, 12. How do you write the answer?
I am repeating. So 9 will come, 2 will come, and whatever this 1 will be carry forward. So 4 plus 1, that is 5. चलो फ्रेश एक बार और करते हैं, फ्रेश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना. सप्तर्षि, ऐश्वर्या, for you once more. Okay, listen very carefully without any fear. If you listen, it will be better. 49, डरना नहीं है, ध्यान से सुनो. 9 square, how much is 9 square? 81. How do I write it in the answer? In the answer, I'll take only 1. And what about this 8? This 8 will be carry forward. Then next part, multiply 4 and 9. Multiply 4 and 9. How much do you get? 36? Double. 36. Double. 64. Double 36. 72. 72. Then 1 carry forward. Sorry, 8 carry forward. 8 carry forward. 80. So 80. 72 plus 8, 80. Once again, 8 carry forward. Now next step, square of this. 4. 16 plus 8, 24. Very good. So 4 ka square, 16 plus 8, 24. Aishwarya, Saptarshi, Ayush, I want a confirmation from you. 2401 कहाँ था? sir. चलो अभी डिफिकल्ट वाला करें. एक डिफिकल्ट वाला कर सकते हैं क्या? कैन वी टेक अप अ डिफिकल्ट? हाँ सर. 56 का स्क्वायर. जो करना पड़ेगा. सुयश म्यूट करो और चुंगम बाहर फेंक के आओ. कौन है ये? चुंगम फेंक के आओ बाहर. 6 का स्क्वायर. एक बार और, मैं एक बार और ध्यान से समझाता हूं. सुहानी, टाइपिंग मिस्टेक. मे बी डॉलर टाइपिंग मिस्टेक शायद. हाँ हाँ. 6 square 36, but I take only 6. 3 carry forward. Then multiply 5 into 6, 30. 30 का डबल 60. 60 and 3, 63. So 3 here, 6 carry forward. Then 5 ka square. 5 square, 25. 25 and 6, 31. Can you do a little more difficult one? 78 square. Can you do a little more difficult one? कुछ नहीं है. हाँ? पूछने दे इसको. मैं काम पूछ नहीं दे रहा, झूठ बोल रहा है. लगाओ दबाओ इसको पूछेगा. अपना अपना कैंसिल. कौन है ये? म्यूट करो. Who is this? Please mute yourself. $78 square. Very good, very good. Obviously, for a larger number, it will be difficult. Yes, that's what you have to understand. So 8, can we try to do it mentally? Ayush, I think carry forward में एक कहीं पे गलती हो गई. कोई बात नहीं, दोबारा करो. Aishwarya, I hope you are able to do it now. 8 square, 64. 4 here, 6 carry forward. 7 8s are 56. 56 into 2, 112. And 6, 118. So 8 here, 11 carry forward. Then 7 square, 49 and 11, 60. 6084. So what do you think? What will be the homework of today's class? Can anyone guess homework of today's class? You have to calculate squares on your own. 7 square is 49, Iravan. 49 and 11 carry forward. 60 आया, 6 नहीं आया. 6 नहीं आया, 60 आया. Calculate squares of all numbers from 15 to 39. Okay,
52 to 89. This is your homework of today's class. Tomorrow's class is the most important one. That actually is the real, taste of Vedic maths, because we'll be using directly what was written in shlokas, but not in Sanskrit. We will never use Sanskrit or the shlokas. We'll only use the methods. Okay? Iraban, 78 square. 8 का square कितना होता है? 64. We take 4 in the answer. 6 carry forward. Then 7 into 8, 56. Double, 112. 112 plus 6 carry forward, 118. So 8 idhar aayega. 11 carry forward. Then 7 square. But Ayush, I have given you the method. I have given you the random method. है ना? जो last में भी किया, I have given you that method. 7 square is 49. 49 plus 11. Carry forward 11. 60. 6084. Right, Iraban? Chalo, badhiya. So we'll take a break today. Tomorrow's class is one of the most important ones. Okay, because tomorrow will be the core methods. Abhi tak jo bhi kar rahe the, till now whatever we did, they were all superficial methods. Tomorrow's method is one of the largest or the longest useful method. नहीं सप्तर्षि, repeat नहीं हो सकता. No, I don't live in West Bengal. I live in India. Okay. All right. Chalo, all right. I'll take a break. I'll see you guys tomorrow. Okay. If anyone wants to say anything, you can say that now. You can unmute yourself. You can do whatever you want to do, man. अब आप जो बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, मेरे से बात कर सकते हो. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So how are the methods today? How are the methods? Difficult from yesterday? Yes, sir. More हाँ easy. सर, आज Thank वाला you, कल से भी sir. डिफिकल्ट था. Sir, it's more easy. Okay, good. So what do you have to do now? You have to repeat all the methods that you did today. Do at least five examples. 5 examples on each method, right? And make sure that you do practice. See, remember what happens. All these methods, they look really nice when you try to learn them. But if you do not use them in practice, in regular practice, you will forget them. That's the worst part of this thing. 2 महीने बाद वापस ऐसा लगेगा, अरे बहुत मजा आया था एक क्लास में, अभी सब भूल गए. ऐसा होगा. So make sure that you keep practicing them, at least couple of examples. And कितनी बार पता है कितनी बार? Total 3 times. अगर आपने 3 बार independently at a gap of 1 day 2 day ऐसा repeat कर दिया ना इन methods को, then you will remember them for entire life, right? ऐसा लेके नहीं होता कि उसको लेके daily आपको खाना खाने के साथ बैठना होता है, ऐसा नहीं होता. 3 to 4 times at max. अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप 4 बार करो. I have never seen a child, however weak in maths, not capable of doing it in 3 to 4 times. पॉइंट ये है कि क्या आप 3 से 4 बार एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार उस पूरी चीज को रिपीट करते हो कि नहीं करते हो. अगर आप ईमानदार बच्चे हो तो आप करते हो, नहीं हो तो आप नहीं करोगे, सीधी सी बात है. अब देख लो कौन कौन चीटर है. हाँ, so right, so very simply make sure that in the next 1 week you repeat all these methods at least 3 times at a gap of 24 hours or 48 hours. उससे लेट करोगे भूल जाओगे, बड़ी से बड़ी चीज लोग भूल जाते हैं, right? So make sure that you repeat at least 3 to 4 times. मैं रिपीट किए जा रहा हूँ. चलो, anyways, anything else? Anyone else wants to? मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा बच्चों कि आप एक चीज सोचो कि आप सीख रहे हो तब डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आईपीएल मैच देख रहे होंगे या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे तो उनका कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है. आपको बहुत सारी चीजें, अब एज ए 36 ईयर मैं नारायणा कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, उसके बावजूद मैं बैठ के एज ए स्टूडेंट सीख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आगे फ्यूचर में हर समय हेल्प करेगा मुझे.
सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मुझे ये आज रियलाइज हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे लग रहा था यार मैं कितना मिस्टेक करता था, आज वो मेरा मतलब ठीक हो गया। अगर ये चीजें मैं बहुत पहले अगर सीख लेता तो शायद बहुत आगे और चला जाता, क्योंकि मैंने चीजें बहुत सारी, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजें आपको आती है बट सिली कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। लेकिन अगर जिसका कैलकुलेशन लेवल अच्छा होता है उसको लाइफ के हर पार्ट पे मैंने आगे देखा है, मतलब नॉट ओनली कि सिर्फ पढ़ाई में आगे देखा है, उसकी एनालिटिकल स्किल, सोचने समझने की थिंकिंग पावर, जो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो सब बहुत इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा अभी लास्ट में मैं वरण्या बेटा कुछ कहना चाहोगे? Yes, sir. Thank you for the class. The class was very good, and I really learned a lot. ओके, सुहानी? Yes, sir. Not much, sir. The class was very interesting. I find these methods absolutely helpful in my mathematics. Being a weak student in mathematics, these methods helps a lot. And the silly mistakes which I actually do, that's getting really improved by these methods. I find these methods really to be interesting, as I was not much aware about these. But after learning these, I'm getting confident about my mathematics. आई थिंक डॉलर मैम सुबह- आप कुछ कहना चाहते हैं, डॉलर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि पुराने मेथड में हमारे मल्टीप्लिकेशन में 3 या 4 डिजिट तक का मल्टीप्लिकेशन हम एक ही मेथड से कर सकते थे, हमें और कुछ याद नहीं रखना पड़ता था। पर ये मेथड में तो सब कुछ हमें बार बार नए सब याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, मेथड जब हम पहली बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तब तक, उसके बाद वो नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो गियर लगाते समय हम सोचते नहीं हैं एक टाइम के बाद, है ना, कि थर्ड गियर से फोर्थ गियर में जाना है, वो नेचुरली होता है। लेकिन जिस दिन पहली बार गाड़ी में बैठते हैं स्टीयरिंग के साथ, कहाँ गया गियर, कहाँ गया, अरे ब्रेक कहाँ है, ऐसे ढूंढते हैं। एबीसी याद करते हैं, फॉर एक्सेलरेशन, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। हमने जब सीखा था फर्स्ट टाइम, मैं तो ऐसे ही सिखाया था। हाँ, इन मेथड्स का फायदा ये है दैट दे हैव ब्रोकन द एंटायर बिगर इशू इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, and that too not all the segments are equally difficult. The important part is that all of them have their own difficulty level in an entirely different manner. For example, yesterday we talked about 5, today we talked about 1. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज हमने सिर्फ 1 की ही बात की है। कल बेस मेथड की बात करेंगे जिसमें 100 की बात करेंगे और 50 की बात करेंगे, परसों क्यूब्स की बात करेंगे। तो क्या हुआ, हर एक को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उससे ज्यादा दे दी हमने, ठीक है, वो मेथड भी खुश हो जाएगा कि मेरा कितना काम हो रहा है, राइट? सो व्हेन वी डू इट अगेन एंड अगेन, then we will not find it difficult, or we will not find it heavy. That's how it is. Those numbers which are difficult, they will remain difficult. Some numbers will always be, creative in their own part, right? अच्छा, एक चीज सुहानी had said something, मैं उसको एक चीज और बोलना चाहता हूँ। मैथ्स में कमजोर होना एक मानसिक परिस्थिति है। Feeling that you're not so good with maths is a mental conditioning. That's the only thing that I can say. I have been teaching maths for the last 24 years now. 24 साल हो गए पढ़ाते हुए, and मेरे 10th में 74% थे और 12th में 77% थे। तो मैं कोई टॉपर या चैंपियन नहीं था। मेरे बहुत सारे लोग साथी हैं, दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, कैलिफोर्निया से लेके उड़ीसा तक, लेकिन बहुत सारे नॉर्मल लोग थे। दे वर ऑल नॉर्मल पीपल, राइट? एक बात पक्की मालूम है, दैट बीइंग और फीलिंग नॉट सो गुड विद मैथ्स इज अ मेंटल कंडीशनिंग। और मजेदार बात, और एक बहुत हिंदी में बोलना चाहता हूं, हम सब ना इस फीलिंग को बिल्कुल प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूं, मैं मैथ्स में बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं मैथ से बहुत डरता हूं। इस फीलिंग को हम बहुत प्यार से तराशते हैं। हाँ, मेरा बेबी, इसको तो मैं बहुत पाल पोस के बड़ा करूंगा। उस डर को अच्छे से खिला पिला के बड़ा करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट इश्यू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप चाहो या ना चाहो, मैथ्स का इस्तेमाल आप कर रहे हो, करोगे, करना पड़ेगा, ठीक है?
whether you know it or you don't know it, you use maths everywhere in life. There is another thing that you need to understand. I'm not talking about applied mathematics. I'm talking about basic mathematics. Applied mathematics is only useful for science, like space research and all those things like calculus और वो सब है, वो बात की बात है. Coordinate geometry, trigonometry, that is a different thing. But trigonometry में भी करते क्या है भाई? Calculation ही होता है ना उसमें भी. So what you are doing right now is basics of calculation. यही calculation NASA वाले भी इस्तेमाल करते हैं in a bigger sense. I mean, sorry, in a much bigger sense, right? So those who are there, they might not be great with mathematics, but they understand calculation and the process of calculation. Okay? So just remember that. दिमाग से ये निकालो कि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ या मैं मैथ्स में खराब हूँ या मैथ्स एक खराब सब्जेक्ट है ना. You know, for example, if you like cooking or if you like dancing or if you like gymming, exercising, or if you like anything else, do you like maths in the same manner? If you don't, then how can you compare? कि मैं कुकिंग में अच्छा हूं क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है और मैथ्स में अच्छा नहीं हूं. अच्छा, how much time are you giving to mathematics on a daily basis? Or compared to, you know, somebody, किसी के लिए क्रिकेट होगा, किसी के लिए सिंगिंग होगा, किसी के लिए डांसिंग होगा. You know, as far as I am concerned, mathematics is a part of daily life. आप चाहो या ना चाहो. So क्या करने का? दोस्ती अगर नहीं कर सकते तो साथ में चल लो थोड़ी दूर. You know, I think किसी गाने का पार्ट है ये कि अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो थोड़ी देर के लिए हम सफर बन जाते हैं. बस इतना करो, शांति रखो, जीवन में आगे बढ़ो. So that's it from my side. एक मिनट सर वो देसाई मैडम, आपने बोला ना कि एक ही मेथड होता है 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी यहाँ पे है. मैं अगर कोई मल्टीप्लिकेशन देता हूँ 3 डिजिट या 4 डिजिट का, अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं तो मुझे 50 डिफरेंट आंसर मिलते हैं, क्योंकि उस मेथड में भी मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा होती है. बच्चा दो, क्योंकि एक बच्चा है ना, वो आप पूछोगे 50 कैसे आ गए 40 में. एक बच्चा 2 बार आंसर बोलेगा, 3 बार ट्राई करेगा. अच्छा ये गलत हो गया, इसको ट्राई करते. ये होता है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पे, ये मैंने देखा है. और बहुत टाइम लगता है वो कैलकुलेटिंग करने में. सब परेशान रहते हैं, 3 मिनट 4 मिनट टाइम लगता है. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज इस प्रैक्टिस है ना, आपको डायरेक्ट अंदाजा लग जाता है कि ये आंसर होगा, इसके आसपास का ये आंसर होगा. अगर यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अगर मैं मतलब 300 to 400 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो करीब 1200 के आसपास ही होगा, थोड़ा आगे पीछे ही होगा. तो ये एक अंदाजा लग जाता है. तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. देखा है. इसलिए मैं उस मेथड को प्रेफर नहीं करता हूँ कि लॉन्ग मेथड में आप जाए, जो एक मेथड है जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं. नए मेथड से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है. चलिए, सो फास्ट हो जाता है. ये सही है कि नहीं बेटा? इरवान, कुछ बोलना चाहोगे बेटा? इरवान. यस सर. ये ऐसा होता है या नहीं होता है क्लास में? क्या बोले सर? हाँ सर. छोड़ दो. Yeah, everyone, final instruction, please repeat the methods on the same day. Okay, before you go to sleep today, repeat all the methods. Okay, and tomorrow do your homework and we'll meet tomorrow again at 6 p.m. All right. Thank you so much. I'm going to end the session now. I'll wait for 15 seconds if anyone has to ask anything. All right, so I think everybody is done. I am also done. Thank you so much. Take care. Good night. Bless you. See you tomorrow. Okay. Good night.